Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing all my great and dear students. We are doing your full syllabus biology marathon. So, as you know, for your final exams, we just have 3 chapters from biology. So, all the 3 chapters ka pura revision plus important questions we are going to do today. 5 questions we are going to do per chapter. So, 15 questions in total. So, all the 3 chapters, as you know, we have fundamental unit of life, then we have tissues and improvement in food resources. Remaining 3 chapters, diversity, why do we fall ill, and natural resources are removed from your syllabus. This year's syllabus, it's not there. So just 3 chapters there, pure 3 chapters today we will complete it. Okay, it's a biology marathon for all my 9th graders. Okay, so let's start with doing our revision. Make sure to like this video, share it with your friends, and subscribe to channel students. Show us your love and motivation so that we are coming up regularly with all such videos. So let us start with the first fundamental unit of life. Correct? Now, students, when I say fundamental unit of life, what comes in your mind? One, cell, isn't it? Cell is the fundamental unit of life. Correct? Cell was first discovered by who? Robert Hooke. Correct? Robert Hooke saw it, and there were many scientists who gave the cell theory like Schleiden, Schwann, Rodolph Virchow, right? All of them उन्होंने दिया. Then main thing is cell में what are the different organelles? Correct? Different organelles in the cell. What are the different organelles? Let us go on the next slide. So you have to remember कि कौन से organelles है. Organelles as in what are the different kind of parts of the cell, correct? For example, we have endoplasmic reticulum, we have nucleus, then we have mitochondria, then what else we have? We have the plastids in plants, correct? We also have lysosomes, correct? Lysosomes. All right, then we have the plasma membrane, correct? Plasma membrane. We also have the cell wall only in plants, correct? Our plastids and cell walls are only present in plants, correct? And there are many more. Nucleolus is there, we have centrioles, ribosomes, etc, etc, correct? Those all are also there. So you have to remember कि क्या कौन सा organelle क्या function कर रहा है, how does it look, because they may give you a picture of cell, they'll say label this what function it do, correct? Then what are the types of cells? Two types of cells are there, prokaryotic and eukaryotic, correct? Prokaryotes means they are primitive, correct? Primitive है. They do not have a well defined nucleus नहीं होता, they have a nucleoid, that is nothing but strands of DNA, nucleoid, correct? और eukaryotes क्या होता है, उनमें सारे organelles होते हैं, एकदम well defined nucleus है, correct? So ये हो गया. I have made detailed lecture videos for your fundamental unit of life, tissues and improvement also, so make sure to check it. I section में आपको सारे links मिल जाएंगे. Okay, so let us start with questions करते हैं अभी. Okay, question 1. Which of the following acts as a garbage disposal system of the cell? Vacuole, lysosome, perioxium, or Golgi body or Golgi apparatus? Disposal system is lysosome. We all know, we also call it as suicidal bags, correct? Suicidal bags, garbage disposal system, etc. Why? Because these lysosomes are capable of digesting the cell. Okay, if there is any foreign material or anything dangerous, cell is damaged, so वो अपने harmful enzymes release करके पूरा cell को digest कर लेगा. Okay, so that's what is known as the disposal system, that is lysosome. All right, sorry. Okay, now next, when we put raisins in water, important questions tonicity के, when we put raisins in water, why do they swell? Correct? Why? Because of osmosis, correct? Osmosis के through. We have studied there are two types of osmosis, correct? One is endosmosis, correct, or endoosmosis you can say, and other one is exosmosis, correct? Endosmosis means that if I have a substance, okay, the water will go inside, correct? The water will go inside and it will become
swelled up, correct? Exosmosis means that it's already swelled up and water will go out, correct? Three types of solutions: hypertonic, hypotonic, isotonic, correct? So when raisins are put in water, they swell because water outside, okay, outside there is much concentration, or raisins में concentration is low, करेक्ट? सो क्या होता है, एंडोस्मोसिस, वाटर जो बाहर का है वो रेजन्स में चला जाता है, एंड रेजन्स दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक, करेक्ट? रेजन बड़े हो जाते हैं, दे स्वेल अप, ओके? सो हाउ डू यू राइट द आंसर? Look over here. Raisins are dry with less water inside. Why? Because it has less concentration. Correct? Concentration is less. And when they are kept in water, osmosis takes place. Which osmosis? Endosmosis. Water flows through the cell wall, cell membrane of the raisins, and it swells up. So it goes inside the raisins and it swells up. Okay? Alright. Let's move to the next question. What is membrane biogenesis? Now, I don't want to explain you orally. याद रखोगे ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से होते हैं? स्मूथ, करेक्ट, स्मूथ and rough endoplasmic reticulums, correct? These two are responsible for the membrane biogenesis. How? Definition is important. इसमें nothing explanation you can do. You have to write के definition लिखना है क्या होता है. तो now explanation I'll do. Okay, to confuse you. Okay, important. Mark it. Endoplasmic reticulum helps in manufacturing of proteins and fat molecules, correct? Rough ER, smooth ER, वो लोग क्या करते हैं? Proteins and fat molecules या lipids को synthesize करते हैं, right? And they are important for the functioning of cell. These proteins and lipids, correct, help in the building of cell membrane. Correct. So you know what is the other name of cell membrane? It is made up of phospholipid. Phospholipid bilayer, correct? Phospho phospholipid bilayer, correct? That is the cell membrane, correct? So phosphates, proteins and fat molecules are needed to make the cell membrane, so that is known as the membrane biogenesis, because in that the rough ER, smooth ER, they produce the proteins and fat molecules, correct? And these make up the cell membrane, so that is known as the membrane biogenesis. All right, okay, let's see ahead. Now, see, as I said, labeling very important. Okay, they will give such diagram. I have not given you colorful, beautiful images of cell. No, why? Because in a question paper they do not give color printouts. आपको नहीं मिलते. You will only get such irregular kind of images. So that's why I've taken the same. See, we have three questions. Label the parts. What functions does part 1 perform, and if organelle 2 is removed, what will happen? Correct? So look over here. Label the parts of the cell. Let's try to label it. So first क्या करते हैं? Let us label it. Correct? Label करते parts को. Now first one. Here if you see, it's marking the outer boundary. एक ही boundary है, मतलब it is animal cell. So what it is? It is obviously the cell membrane. Correct? Cell membrane. Okay. Now second one. See. So it is a bean kind of shape with something other inside. So that is the mitochondria. Okay. That is the mitochondria. Next, third one, tiny सा है near the nucleus, so it is the rough endoplasmic reticulum, correct? And now fourth one क्या है? Inside है, it's not spherical, ये strands of DNA. So fourth, I'll write here no space, so it is chromosomes, okay? Chromosomes. And fifth one क्या है? एकदम spherical body inside the nucleus, that is the nucleolus. Okay, nucleolus. All right, ये पांच लेबल हो गए, done. 1 mark you got. Next, 2 marks or 2 mark का question. In total 5 mark का question we are doing. Okay, now what function does part 1 perform? Part 1 क्या है? Cell membrane. Cell membrane performs what? It performs the function of protection. Cell को protect करते हैं, right? And it is semi permeable. जो anything can specific thing can go in and go out of the cell. Okay, if organelle 2 is removed, what effect is it going to make on the cell? 2 क्या है? Mitochondria. Mitochondria produces ATP, adenosine triphosphate, energy house, powerhouse of the cell, correct? So that is why it is important, because if it's not there, energy cell को नहीं मिलेगी. Okay, so look over here.
cell membrane, mitochondria, RER, chromosome nucleolus, then selective transportation through semi permeable membrane, very important point, okay. And if mitochondria is not there, cell will become energy deficient, okay. Let's move towards the last question, cell के लिए. What is the cell theory and who formulated it? See, cell theory में 3 points. I'll show you step by step को क्या लिखना है. And who were the three people? Schleiden, Schwann and later on came Rudolf Virchow. And उन्होंने discover किया और अपनी अपनी cell theories दी. Correct? Look over here. Exact word to word लिखना है, right? So cell theory is the basic principles of biology. Correct? Biology में basic cell होता है, right? So it is the basic principle. किसने किसने फॉर्मुलेट किया? 3 people ने, एक ने नहीं किया. थियोडोर श्वान, स्क्लीडन एंड रुडोल्फ वर्चो, इन तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी के 3 points दिए. क्या क्या 3 points है? फर्स्ट, दिस यू हैव टू रिमेंबर एज इट इज, यू कैन नॉट मेक चेंजेस, एज इट इज यू हैव टू मेक. All living organisms are composed of cells. Schwann and Scleden said that no. Schwann said that it's made of plants. Scleden said no, animals. So they said that all living organisms are made of cells. Okay. Cell is the basic unit of life, means it is the structural and functional unit of life. Second point, and cells arise from pre-existing cells. This was given by Virchow. Okay, in that time it was written as omnicellulae e cellulae. That means cells arise from pre-existing cells. If there is one cell, new cell will come from it only. It will not come from heaven. No, it will come from the previous cell only. ठीक है, तो विद दिस सेल चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर दैट ओनली. वी कैन विद थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर दैट ओनली वी आर कवरिंग. ओके, ऑलराइट, अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, द लेंथी चैप्टर ऑफ बायोलॉजी. आफ्टर डाइवर्सिटी सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर इज टिश्यूज ओनली. ओके, टिश्यूज में हैव टू रिमेंबर टिश्यूज. करेक्ट, टिश्यूज एकदम वास्ट टॉपिक. यू हैव animal tissues, then you have plant tissues. In plant tissues again you have two types. Animal tissue again you have many types. Correct, so on sabka you have to remember three things: structure, function and location. These are the three things you have to remember for every cell, sorry, every tissue. Plant tissue, animal tissue, you have to remember वो कैसा दिखता है, क्या function perform करता है, and where is it located. These are the main points. ठीक है, so let us start with doing the tissues. Okay, पहले एक MCQ करेंगे. Simple permanent tissue. Simple permanent tissue. पहले simple permanent, so what are the three types? We know the three types are parenchyma. Correct, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Correct, these are the three types of simple permanent. Then complex permanent are xylem, xylem and phloem. Correct, so while doing the question we'll revise the concepts also. Okay, now they are telling that simple permanent जिसके पास होता है thick wall, narrow, elongated and dead cells, something like this. What is that? That is the पहली बात. उन्होंने dead cell बोल दिया तो simple permanent में sclerenchyma is the only cell which is dead. ठीक है, it provides rigidity and mechanical support. So इसलिए वो dead ही होता है. dead cell पूछा simple permanent, direct sclerenchyma. Okay, let's see ahead. State the differences between simple tissues of plants. As I said, parenchyma, then collenchyma, then sclerenchyma. Mostly they will ask you three, in 3 marks पूछेंगे वो लोग. राइट द लोकेशन, स्ट्रक्चर, वेयर इज इट लोकेटेड. ठीक है, लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऐसा वो लोग पूछेंगे. यू हैव टू राइट ऑल द थ्री थिंग्स. ओके, पेरेन्काइमा के वन मोर एज हम रिवीजन भी कर रहे हैं अलोंग साइड. सो कॉल पेरेन्काइमा के देयर आर टू मोर. करेक्ट, आई विल शो यू द आंसर बट रिवीजन भी करते हैं. राइट, सो पेरेन्काइमा के देयर आर टू पार्ट्स. करेक्ट, टू पार्ट्स होते हैं, एरेन्काइमा and chlorenchyma, not collenchyma, chlorenchyma. Okay,
नाउ एरेनकाइमा इज द वन विच हैज एयर स्पेसेस, उसके पास एयर स्पेसेस होती है फॉर फ्लोटेशन एंड एवरीथिंग, बायंसी। क्लोरेनकाइमा में होता है क्लोरोफिल, क्या होता है, इट हैज क्लोरोफिल इन इट। ओके, सो ये दो होते हैं पैरेंकाइमा के टाइप्स। अब उनको करना है डिफरेंशिएशन इन तीनों के बीच, सो डू द डिफरेंशिएट, लुक ओवर हियर। पैरेंकाइमा, cells are living thin walled, correct, cells are living thin walled, all right। collenchyma में cells living होते हैं और corners पे thick होते हैं, उनके wall thick walls होते हैं, thick होते हैं। then sclerenchyma में दो dead होते हैं, the main point dead, और thick wall है due to lignin, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन से बना होता है, पैरेनकाइमा में सेलुलोस, और कोलेनकाइमा में पेक्टिन। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसमें बना होता है विद सेलुलोस, here it is made up of pectin plus hemicellulose, तो pectin remember कर लो, और sclerenchyma में lignin। now parenchyma के cells are oval और spherical और polygonal in shape, collenchyma के long होते हैं, thick होते हैं corners पे, और ये long and narrow like this and this ऐसे होते हैं, ठीक है। now देर इज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, स्पेसेस ज्यादा होती है। कॉलेनकाइमा में स्पेसेस बहुत कम होती है, और स्क्लेरेनकाइमा में बिल्कुल स्पेस ही नहीं होती। ओके, बिटवीन टू सेल्स स्पेसेस आर नॉट देयर। ओके, सो ये हो गए आपके डिफरेंसेस। अब थोड़ा एनिमल सेल्स पे जाते हैं। विच टिश्यू प्रोटेक्ट्स द एंटायर बॉडी, बॉडी हैज अ आउटर कवरिंग, करेक्ट, बॉडी के पास एक आउटर कवरिंग होती है, नोन एज द epithelial tissue, correct, epithelial tissue। what are the types of epithelial tissue? Squamous, correct, squamous, cuboidal, then columnar, columnar, what else, glandular, correct। so all this you have to remember, again three things, SFL, structure, function, location। okay, look over here, let's see the points। see, epithelial tissue protects the entire body, outer covering, correct, it's a lining over all the inside of the body also and outer side of the body। okay, inner part let's say stomach, on sub maybe we have the epithelial tissue, it is also secretory in function to secrete sebum, it is a what can I say, chemical, and excretes waste also along with sweat, correct, urine, it's all excretion। sometimes it is absorptive in nature, absorb कर लेता है, and it acts as a barrier to keep the different body systems separate। नहीं तो है ना, सबको separate separate रखने के लिए it becomes as a wall बन जाता है सबके बीच। okay, now next mention the functions of nervous tissue। when nervous tissue, जैसे ही nervous tissue बोलते सीधा याद कर लो neurons, correct, directly have to remember how does neuron look like, something like this, you have to remember till date। okay students, it's very important because in your 10th grade also you have this chapter, control and coordination, so yes, it's important, correct। this is your nucleus, correct, this is the cell body or the cyton, this is the dendrites, correct, these are the dendrites। okay, then ये पूरी body is known as axon, उसके ऊपर एक रबर काइंड ऑफ इंसुलेशन शीट्स होती है नोन एज माइलन शीट्स, करेक्ट, और बिटवीन टू माइलन शीट्स वेयर देयर इज नो माइलन शीट, वो दोनों माइलन शीट के बीच की जगह इज नोन एज दी नोड्स ऑफ रैनवियर। ओके, और एंड में जो दीज आर नोन एज दी एक्सॉन endings। okay, so that is the nervous neuron ka diagram, if they ask you, you have to draw them, all right। so remember this diagram if they ask you in case, but ये question क्या बोल रहा है, we have to write the functions, तो function लिख देते, but you have to remember this। okay, now see this functions क्या, main is for control coordination, CNC control coordination के लिए ही है main nervous tissue, ठीक है, I'll understand in detail next year। they conduct nerve impulses, synapses and everything, वो conduct करते हैं, एक
पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ओके, एंड दे अलाउस टू मूव आवर मसल्स, थिंक एंड एवरीथिंग। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो इम्पल्सेस कैरी होते हैं, एंड देन वी डिसाइड हमको क्या करना है, ओके। वो एक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यू माइट हैव वर्ड, सो नर्व इम्पल्सेस रिसीव अ स्टिमुलाई, okay, and from outside environment, like if you touch something hot, you immediately remove your hand, है ना? Why? Because that impulse goes to your brain that okay, remove the hand, so it happens, okay. So it's very rapidly happening to the brain and the spinal cord, the central nervous system, okay. You'll study more आगे 10th में पढ़ना ही है, so no problem, okay. Last question, not more of a question but more of a revision, ठीक है। प्लांट टिश्यूज का एक फ्लो चार्ट, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक में एपिकल जो होते हैं एपेक्स पे, सबसे टॉप पे जो टिप इंक्रीज करते हैं। लैटरल क्या होता है, जो लैटरली होते हैं, लैटरल साइड साइड पे होते हैं स्टेम के, गर्थ इंक्रीज करते हैं। और इंटरकैलरी नोड्स के मिडल में होते हैं, नोड्स के बीच में होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, करेक्ट। देन परमानेंट तो पता ही हमको, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरन कॉलन स्क्लीरन, पैरन में होता है क्लोरन काइमा, आयरन काइमा, कॉलन काइमा और स्क्लीरन काइमा, ये सब तो हमने पढ़ दिया। जाइलम फ्लोएम होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, करेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, करेक्ट। वास्कुलर बंडल, वाटर फूड को ट्रैवलिंग करते हैं, करेक्ट। दे हैव ट्रकीज, वेसल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब जाते हैं बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर के ऊपर फॉर दिस ईयर, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड। ये तो एकदम रिसेंट सा चैप्टर है, इजी सा, बेसिक नॉलेज यू हैव टू नो, ठीक है, इजी सा चैप्टर है ये। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, हैव टू रिमेंबर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैन्योर्स क्या होते हैं, व्हाट इज एनिमल हस्बेंडरी, करेक्ट। आई हैव ऑलरेडी मेड 3-4 videos on it. You should refer all the videos are done in the art section. So animal husbandry, all this you have to remember. Improvement for बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं, okay. So let us do some, इनके भी कर लेते हैं questions, then we'll go, okay. So, first one, dash is a method of control of pest or weeding. Which one living organism is used to control other living organisms, ठीक है। सो किस मेथड को हम वीडिंग के लिए यूज करते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल और मैकेनिकल। बायोलॉजिकल कंट्रोल बिकॉज वीड्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है, एज इन दे टेक कंट्रोल, उसका मैकेनिज्म ले लेते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज बायोलॉजिकल। Okay, next. Name two leguminous fodder which are released by cattle. Two leguminous plants नहीं बोला. If they ask you plants, if they ask you for leguminous plants, you can write pea, mustard, everything. Okay. Why? They fix nitrogen. They fix nitrogen फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द प्लांट्स, ओके, फिक्सेशन करते हैं। बट उनको पूछा है लेगुमिनस फॉडर। फॉडर दो टाइप्स के लेगुमिनस फॉडर होते हैं जो प्लांट्स यूज करते हैं, आई मीन ईट करते हैं, सॉरी नॉट प्लांट्स, कैटल ईट करते हैं, दैट इज बर्सीम एंड ल्यूक्रिन, okay. Leucrin is also known as the king of fodders, okay. So berseem and leucrin are the two leguminous fodders, okay. अब आगे जाते हैं, what is genetic manipulation, how is it useful in agriculture practice। देखो, it is basic that अगर मेरे पास एक क्रॉप है, क्रॉप ए, ठीक है, it is giving me good yield, ठीक है, yield अच्छी होती है, बट yield अच्छी है बट इट इज नॉट डिजीज रेजिस्टेंट। डिजीज इसको इजीली लग जाती है, राइट। सो what can we do, we can take one more other kind of variety, let's say we have another variety of bee, okay. It doesn't give good yield but it is disease resistant, okay, disease resistant है ये, this species is disease resistant। so if I manipulate उन दोनों का data, correct, if I, so उनका डीएनए, डीएनए टेकन, दोनों का डीएनए करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, क्या मिलता है हमको, एक न्यू हाइब्रिड मिलता है, ठीक है। उनका डीएनए मैनिपुलेट करेंगे, न्यू हाइब्रिड मिलता है जिसकी गुड यील्ड भी होती है और डिजीज रेजिस्टेंट भी होता है, करेक्ट। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ऐसे सब होते हैं, स्टडी इन नेक्स्ट ईयर, वो भी नेक्स्ट ईयर ही करोगे, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड डिटेल्ड आंसर, लुक ओवर हियर। Plant breeding, also known as hybridization, is a method where we involve cross breeding of two different varieties to get a new and better variety of crop, which is known as genetic manipulation. In agriculture practices to reduce the application of insecticides and fungicides.
or even fertilizers. Such varieties are being prepared that are, see, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गेट टेकिंग अ नॉर्मल क्रॉप, उसमें इंसेक्टिसाइड लगेंगे, फंगिसाइड लगेंगे, फर्टिलाइजर, राइट, इन सब का ज्यादा यूज होगा एंड दैट विल रिजल्ट इन पॉल्यूशन. बट ये अगर हम न्यू हाइब्रिड क्रिएट करते हैं तो हाई ईल्ड देगा, पेस्ट रेजिस्टेंट होगा, और एनवायरमेंटल स्ट्रेस मतलब एबायोटिक बायोटिक फैक्टर से भी रेजिस्टेंट होगा, और उसको फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है, तो फंगिसाइड्स नहीं चाहिए, इंसेक्टिसाइड नहीं, नो फर्टिलाइजर्स, नथिंग. सो इट इज मोर beneficial. Okay, so let's see ahead. Question number 4, what are manures? Manures are organic in nature, correct? They are organic. ऑर्गेनिक होता है, टोटल ऑर्गेनिक होते हैं. एंड व्हाट डू वी गेट इज, वो लोग, इट इज मेड, यू नो, लाइक ऑल द थिंग्स, लाइक यू मेक इट फ्रॉम द waste of vegetables and fruits, correct, waste fruit peels and all, correct, then from cow dung, correct, cow dung. Even it is made by the process of vermicomposting, correct, vermicomposting, where red worms are used and then it is, done. Look over here how. um manures, they contain large quantities of organic matter, correct. Organic matter ढेर सारा होता है but nutrients कम होते हैं, correct. It is made by the natural things, कोई chemicals नहीं. It is made naturally by animal waste, excreta, like I said, cow dung, plant waste, जो peels हो गए, dead leaves हो गए, उन सब से. It helps in soil enrichment, और soil एकदम rich हो जाता है with nutrients and organic matter. सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है, बिकॉज दिस इज केमिकल फ्री, कोई केमिकल नहीं, ऑर्गेनिक है, तो इसलिए अच्छा होता है. इट हेल्प इन इंक्रीजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल्स में. ये सॉइल को साथ में ले आता है, एकदम टाइट कर देता है, एंड वाटर इसमें ज्यादा होल्ड होता है. क्लेई सॉइल में वाटर ड्रेनेज एंड प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, ठीक है, वाटर ड्रेनेज में हेल्प करता है, वाटर लॉगिंग से होने में प्रिवेंट करता है. ऑल राइट, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग? I said you बहुत तरह के होते हैं. We have mixed cropping, we have intercropping and we have what, crop rotation. Intercropping क्या होते हैं? This is my land, ठीक है, ये land I have explained it in detail. Okay, थोड़ा अच्छा land बनाते हैं. रुको. See, this is my land. Okay, rough diagram. This is my land. First rows, this two rows I'm growing, let's say, oat. Next, leaving space, this two I am growing wheat. Then this two I am growing soya bean. Okay, so what I'm doing, specific patterns में I'm growing the crops, correct? उसको बोलते हैं intercropping. So look over here. क्या advantages होता है, हमको define ही करना क्या होता है, just advantages. It helps in maintaining soil fertility, for soil fertility, because एक एक एरिया में एक स्पेसिफिक क्रॉप ग्रो रहे, साथ ही में एक ही नहीं, एक अभी दो वीट के लगा दिए, बाद में पांच ओट्स के लगा दिए, नो. सो इट हेल्प्स इन सॉइल फर्टिलिटी. प्रोडक्टिविटी पर यूनिट है, एक यूनिट में ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है हमको, बिकॉज हम ऑर्गेनाइजिंगली लगा रहे, करेक्ट, लेबर और टाइम सेव होता है. एंड बोथ क्रॉप्स कैन बी इजिली हार्वेस्टेड एंड प्रोसेस सेपरेटली. अलग अलग, ऐसा नहीं अरे अरे ओट्स के साथ वीट में मिक्स हो गया, राइस में नहीं, एकदम अलग अलग ऑर्गेनाइज है, तो इजिली वो हार्वेस्ट और प्रोसेस हो जाते हैं. सो विद सिंस हाफ एन आवर में हमने कंप्लीट कर दिया है आपका पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर नहीं, पूरा बायोलॉजी का रिवीजन फॉर दिस ईयर, करेक्ट. बस आपको भी केमिस्ट्री और फिजिक्स करना है, दैट ऑल्सो वी आर अपलोडिंग वीडियोस, फिजिक्स इज कमिंग वेरी सून. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. आई विल बी सीइंग इन वेरी नेक्स्ट वीडियोस फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. बायोलॉजी का पूरा ग्रेड 9 का सिलेबस इज completed. I'll be seeing you soon in upcoming videos. Till then, make sure to subscribe to the channel, hit the bell icon for regular notifications. I'll be seeing you soon. Till then, take care and goodbye.